पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम् आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्। नित्यानन्देश्वर समारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इस समय हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों का मेरा प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत। When your Kundalini is awakened, first thing you will experience a deep fulfillment, such contentment. In every dimension of your life, you will see God. Too much, enough. It's overflowing. The overflowing experience of life will be tasted by your biomemory first time. Very rarely your muscle memory tastes the overflowing experience, but unfortunately, because it is immediately forgotten, biomemory never experiences. For every human being, Kundalini awakening is a basic need. Till then, you will be having the deep unfulfillment in some form or other. जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब आप एक अद्भुत और गहरी पूर्णत्व स्थिति को अनुभव करते हैं। आपके शरीर में भी दो हिस्से हैं, कुंडलिनी शक्ति और आपका शरीर। केवल थोड़ा पैसा, थोड़ा आराम एक आम खाने के समान है, किंतु वो उस फल की परिपूर्णता नहीं है। फल तभी अपनी जीवन का अस्तित्व तभी समझता है जब उसका बीज अनेक फल देता है। I'll tell you, somehow find a right master and awaken your Kundalini. Somehow. Because only then new life starts. Only then your new life starts. Whether it is in the level of physical health, mental health, clarity to do what you want to do. Clarity to experience what you want to experience. Many times you don't know what to do. Many times you don't know how to enjoy even what you want is in front of you. Even when what you want is in front of you, you do not know how to enjoy. You go on be caught with foolish unconscious emotions. जैसे भी करके अपने लिए सही गुरु का खोज कीजिए और अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। तभी आपका नया जीवन आरंभ होता है। चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, मनोबल हो, जीवन को समझने की स्पष्टता हो, यह सब तभी संभव होगा। Every individual should somehow experience Kundalini awakening and allow the Kundalini experience to settle down in your muscle memory and biomemory. Many times people ask me, Swamiji, why your meditation program is 21 days? If it is just few days, lot of people can come, lot of us can come.
I know lot of you will come, but what is the use? If I am not able to do what really needs to be done, and you are not getting what really need to be gained, then what is the use even if you come? I do 2-day, 3-day programs. That is more like giving a glimpse of the Kundalini. This May inner awakening, with integrity and authenticity and responsibility and enriching, I declare, every individual who attends the May inner awakening, I commit with you all, will have the experience of फिजिकल लेविटेशन मूवमेंट. हर व्यक्ति को किसी भी तरह कुंडलिनी शक्ति का अनुभव करना चाहिए और महत्व रूप से उस कुंडलिनी शक्ति को अपने भीतर स्थायी करनी चाहिए. उसमें इनर अवेकनिंग में हर व्यक्ति को कुंडलिनी शक्ति जागरण का प्रत्यक्ष शारीरिक रूप से अनुभव होगा. ये मेरा वचन है. This is the greatest gift any human being can receive in their life. Kundalini awakening can be done just by the initiation, by the right master. But only if your body is prepared by the proper yoga and kriya, mind is prepared by the proper Dhamma and cognitive shift, only then it will have a permanent impact in your life. Otherwise, I have seen some people so much of discontentment in their life, I feel sympathetic towards them. Oh God, poor fellows. मैं पूरी संपूर्ति श्रद्धा उत्तरदायित्व एवं लाभान्वित करने के या 4 तत्व के आधार पे यह घोषणा करता हूँ कि अगले महीने हो रहे हमारा इनर अवेकनिंग कार्यक्रम में जो भी भाग लेंगे, मैं उन सब की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की वचन देता हूँ. कई बार लोग मुझे पूछते हैं यह 21 दिन के लिए क्यों है कार्यक्रम, 2 या 4 दिन का कार्यक्रम क्यों नहीं? समझने का प्रयास कीजिए. कुंडलिनी शक्ति को स्थायी रूप में आपने दे एवं मन में अनुभव करने के लिए कम से कम 21 दिन का जरूरत है. Your body needs to be prepared with the proper yoga and kriya. Your mind needs to be completely rewired with the new way of thinking, with these 4 dharma, 4 principles as the base and cognitive shift. Cognitive shift is expected. Cognitive shift has to happen. I tell you, with cognitive shift, you build new being for yourself. Inner awakening. Running health recoveries. 100% cure for depression, insomnia, asthma, fatigue, chronic pain, insecurity, panic attacks, and other major disorders. Awaken the Kundalini Shakti, the dormant energy within. What would you do if you had 1300% more energy? Disease-free mind and body is your first wealth. Claim it at Inner Awakening.
Inner Awakening, a 21-day meditation retreat with rare living incarnation, Paramahamsa Nityananda, May 8th to May 28th, 2013, Nityananda Dhyanapita, Nityananda Nagar, Bidadi, Bengaluru, Karnataka. Contact 0802 727 9999. email ia@nityananda.org. Hi, this is Rohan, and I've come for Inner Awakening, and by far it has been one of the most amazing experiences of my life. Everything here is transformational. From he's given us death experiences, he's given us death experiences, and I've realized that now the duration to which I sleep is like just about 4 or 5 hours. Before, like it used to be like 9 or 10 hours or something. There's quite of a reduction, and I can see changes happening. Like physically, I'm able to do much more. There's much more stamina increase, and I'm much more peaceful, much more calm. I can think better, and I do stuff in a much more efficient manner, like stamina-wise only. And yes, I would recommend this to anybody. It is one of the most amazing experiences that you'll have, and you'll never regret it. It's a thing that you'll carry on for a lifetime. It's a life-changing thing, and it changes the outlook to everything you think and how you do stuff. I think the modern youth should definitely try this Inner Awakening, because right now in the outside world it is just a rat race of academics, this that, that's all. So I think if a person of around 20 comes and visits, takes the Inner Awakening training, then they would actually get a clarity in life. They will know that they're studying because they want to study. They are not studying because they have to study. Stuff like that, the pressure, the stress just gets removed, and all you do is just study. You don't exactly feel the stress, you don't feel the pressure. So I would definitely recommend this. I tell you, with cognitive shift, you build new being for yourself, and you radiate so much of goodness, and ultimately you achieve the most powerful truth. कुंडलिनी जागरण सही गुरु द्वारा केवल दीक्षा द्वारा हो सकती है, किंतु आपका शरीर योग द्वारा तैयार होना चाहिए, आपका मन सही समझ द्वारा तैयार होना चाहिए, तभी वो कुंडलिनी शक्ति आपके भीतर स्थायी हो सकती है, तभी उस कुंडलिनी शक्ति जागरण से आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। आपकी कुंडलिनी शक्ति की जागृत होने से आपके सोच विचार की धारा एवं मनोस्थिति का परिवर्तन होती है, जिससे आप एक अनोखा और नया जीवन का अनुभव कर सकते हैं। The energy gushing in your body will give you a new excitement, I tell you. Not just creating the health you want, or the wealth you want, or relationships you want, even the gods to whom you are praying, meditating, having the darshan of the Ishta Devatas is simply possible when the Kundalini is awakened. I have seen thousands of people directly having darshan of their Ishta Devatas, experiencing the extraordinary restful awareness, the Advaita Anubhuti, realizing the non-duality, eternal restful awareness, the oneness happens. Please listen, this happens when your Kundalini is awakened. Whatever you think as auspicious, the great, right, best, simply becomes reality. It unfolds inside and outside. You just know you are living exactly the life always you wanted. And you know how to keep this awakened Kundalini alive in your body, in your muscle memory, in your bio memory. Kriyas,
and yoga prepares your body. This four tattvas prepares your mind. Kundalini awakening causes the conscious shift, the cognitive shift in your being, which leads to ultimate completion, contentment. Completion with yourself is contentment. Completion with everyone around you is peace. Completion with the whole cosmos is bliss. You will experience all the three when your Kundalini is awakened. कुंडलिनी शक्ति जागरण द्वारा आपके शरीर में जो ऊर्जा का सर्वोच्च प्रवाह होता है वो केवल आप में स्वास्थ्य, धनाकर्षण, परिपूर्ण संबंध ही नहीं लाता है, पर आपका जीवन उत्साह से बार जाता है। आपको आपकी इष्ट देवता का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है, पर आपका जीवन उत्साह से पर जाता है। आपको आपके इष्ट देवता का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। मैंने हजारों लोगों को देखा है जिनको अपनी इष्ट देवता की दर्शन प्राप्त होती है जब उनका कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। उनको अद्वैत स्थिति का अनुभव होता है और वे पूरे ब्रह्मांड के साथ एक गहरी, शांतिपूर्ण एवं आनंदमय तालमेल को अनुभव करते हैं। Awakening your Kundalini and making that energy stay in you eternally is the first step for life. Listen, first step for life. Somehow, without the right knowledge, the Kundalini word has been corrupted and given the wrong meanings, given some voodoo, jadoo, cult, that kind of a look. I tell you, Kundalini awakening is a scientific process. The results can be scientifically verifiable, scientifically validated. It can be validated. अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना एवं उस शक्ति को अपने जीवन में स्थायी करना आपके जीवन का अनिवार्य पहला कदम है। जीवन का पहला कदम है आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना और स्थायी रूप में आपके भीतर उसे स्थापित करना। When your Kundalini is awakened, your level of authenticity goes up, level of integrity goes up, level of responsibility goes up, level of enriching goes up. The way you think about you, the way you think about others, the way you project yourself to others, the way you fulfill what others expect from you goes up to a different plane altogether. You become a new being. When you experience Kundalini, the internal conflicts you carry disappears. The struggle you are going through with yourself internally, should I do this or do that? Should I think this way or that way? Should I look this or that? Should I feel this or that? Should I go for this or that? Everything
disappears. जब आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, तब आप स्वयं के बारे में सोचते हैं, स्वयं को अन्य लोगों के सामने जो प्रस्तुत करते हैं और अन्य लोग जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, यह सभी अगला स्तर पे पहुंच जाती है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, आप में संपूर्ति बढ़ जाती है, आप में श्रद्धा बढ़ जाती है, आप में उत्तरदायित्व उठाने की क्षमता बढ़ जाती है, आप में लाभान्वित करने की शक्ति बढ़ जाती है और आपके जीवन का हर संघर्ष समाप्त हो जाती है। लाइफ, the very perception and response to it becomes totally different when your kundalini is awakened. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ, ಭಯ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ, ಉನ್ನತ ಚೈತನ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಧ್ಯಾನ ಶಿಬಿರ. 7 ಪರಿವರ್ತನಾಕಾರಕ ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂದ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಧ್ಯಾನಪೀಠ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಗರ, ಬಿಡದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0802 727 9999. In the world with so many medical researches, scientific researches, medical recordings, we have proved Kundalini awakening is possible and the effects of it is scientifically verifiable, and the extraordinary powers happening through Kundalini awakening like teleportation, materialization and all is possible. आपके कुंडलिनी जागरण से जीवन के बारे में जो आपका दृष्टिकोण है और जीवन के प्रति जो आपका प्रतिक्रिया पूरी तरह से परिवर्तित एवं विस्तारित हो जाती है. Patanjali says the highest Kundalini awakening experience is Jakrat Sushupti, restful awareness, deep restfulness, peak awareness. We proved through the QEEG researches, the medical researches, scientific researches, when your Kundalini is awakened by initiation. When I was awakening the people's Kundalini through initiation, we studied their brains through QEEG. It shows very clearly they are in the deepest restfulness and peak awareness. The Jakrat Sushupti Nirvikalpa Samadhi Patanjali talks is medically recorded, scientifically proven by this Kundalini awakening. Because for any samyama, pratyagara, dharana, dhyana, samadhi has to happen. Dharana, dhyana, samadhi is put together is samyama. First time by the God's grace and the grace of the Guru Parampara, we proved the power of Kundalini awakening through the medical researches and scientific researches and medically recording the data, scientifically validating it. The 4 tattvas powerfully
when they start living these 4 principles powerfully, Kundalini energy is awakened. हमने QEEG अनुसंधान द्वारा, चिकित्सा एवं वैदिक अनुसंधान द्वारा, वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा ये साबित किया है कि कुंडलिनी शक्ति जब व्यक्ति में जागृत की जाती है, उसका मन सर्वोच्च शांति की स्थिति में है और उसी समय सर्वोच्च जागरूकता भी है। पतंजलि कहते हैं, आप में सबसे सर्वोच्च स्थिति आपके कुंडलिनी शक्ति का वह जागृत स्थिति है जो आप में जागृत सुषुप्ति की अवस्था को स्थापित करता है। इसी स्थिति को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। इस स्थिति में आप अपने सर्वोच्च जागरण स्थिति में रहते हैं। आपकी जागरूकता उच्चतम स्थिति में रहते हैं और उसके साथ साथ सर्वोच्च शांति में, आनंद स्थिति में भी रहते हैं। विथ प्रॉपर क्रियास, yoga, your body should be prepared and proper tattvas, principles, mind should be prepared with proper initiation. Kundalini should be awakened, then the whole awakened energy stays inside your system eternally as part of your muscle memory and biomemory. You become new being, a Jivan Mukta. You know how to carry the space of Nityanandoham, the eternal bliss in you. सही प्रक्रिया एवं योगा को उपयोग करके आपका देह एवं मन को तैयार करनी चाहिए। तब आप में जागृत पूरी कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर सम्मिलित हो जाती है और आप निरंतर काल तक नित्यानंद एवं निरंतर आनंद के स्थिति में स्थापित हो जाएंगे। आज की सत्संग का सारांश है, somehow experience Kundalini awakening. That is the first thing you need to do in your life. आज की सत्संग का सारांश है, केवल आपकी कुंडलिनी शक्ति के जागरण से ही आप जीवन सही मायने में जीने लगते हैं। हमारे 21 दिन के कार्यक्रम में भाग लीजिए और अपनी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होने की संभावना का अनुभव कीजिए। किसी भी तरह कुंडलिनी शक्ति का अनुभव कीजिए, यही आपके जीवन का पहला कदम है। Let you all achieve, experience, live, express, radiate, share and explode in eternal bliss. Nityananda. Nityananda Dhyanapitham, Nityananda Nagar, off Mysore Road, Bidadi, Bengaluru. Phone 08027279999. www.nityananda.org. www.youtube.com/Life Bliss Foundation.